हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और मैं लाई हूं एक नहीं, दो नहीं, तीन सुपर इंटरेस्टिंग एजुकेशनल किट्स। ये किट्स हैं इमेजिमेक मैपोलॉजी सीरीज का हिस्सा, जो इंडिया के ज्योग्राफी, मॉन्यूमेंट्स और नेशनल सिंबल्स के बारे में फन वे में सिखाते हैं। चल के साथ में अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कौन सा किट सबसे ज्यादा मजेदार है। तो मेरे पास है किट नंबर 1, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। किट नंबर 2, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। और किट नंबर 3, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो मुझे पड़ा 848 रुपीज का। प्राइस में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे इस किट की डिटेलिंग बहुत पसंद आई। माउंटेन्स का हाई डिफरेंस भी शो होता है और रिवर का फ्लो क्लियरली दिखाया गया है। ज्योग्राफी सीखने का ये एक फन और इंटरेक्टिव तरीका है।
ऑफ इंडिया, जो मैंने परचेज किया 426 रुपीज में। ये किट यंगर किड्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि मॉडल्स बनाना सिंपल है और साथ ही बच्चे नेशनल आइडेंटिटी के इंपॉर्टेंट सिंबल्स याद रखते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटी प्लस लर्निंग का बेस्ट मिक्स। बारे फिक्स करना है। इंडिया जो मैंने लिया है 648 रुपीज में। मॉन्यूमेंट्स लवर्स के लिए ये किट एकदम मस्ट हैव है।
इससे बच्चे हिस्ट्री के साथ साथ इंडिया के डाइवर्स आर्किटेक्चर को एप्रिशिएट करना सीखते हैं। असेंबली थोड़ा पेशेंस मांगता है, लेकिन रिजल्ट बहुत खूबसूरत होता है। फाइनल वर्डिक्ट, तीनों ही किट एक से बढ़कर एक है और मेरी फेवरेट बनी मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया वाली किट। लेकिन अगर डिटेल ज्योग्राफी पसंद है तो फिजिकल फीचर्स वाली बेस्ट है। मेरे जैसे मॉन्यूमेंट्स लवर के लिए मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया वाली किट परफेक्ट है और यंगर किड्स को नेशनल सिंबल्स वाली किट ज्यादा मजेदार लगेगी। आपको कौन सा किट सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट में बताओ। जय हिंद।